Good morning, students. Today we will discuss about amines. Next functional group, amines. Amines are actually obtained from ammonia. Ammonia formula is NH3. When hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group, then amines are obtained. That means amines are obtained from ammonia, and they are alkyl derivative of ammonia. This one is ammonia. This one is amines. Amine, what is amine? So amine is a alkyl derivative of ammonia in which hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group. So that we get R single bond NH2. Amines are alkyl derivative. We are adding alkyl group. That's why they are alkyl derivative of. That means ammonia in which hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group. So we get R single bond NH2. This is called as amine. Representation is R single bond NH2 and functional group is single bond NH2. Single bond NH2. This is functional group. Now actually amines are of three types: primary, secondary and tertiary. Monoalkyl derivative of ammonia are called as primary amines, in which one hydrogen atom of ammonia is replaced by one alkyl group. Now suppose we are replacing two hydrogen atom and we are introducing two alkyl group from NH3. First case में we are replacing only one hydrogen atom by one alkyl group. Now in second situation we are replacing two hydrogen atom by two alkyl group. So we get R2NH. First में आया था RNH2. Now two alkyl group get introduced, therefore R2 and remaining only NH. That means R2NH. This is called as secondary amines. Secondary amines are dialkyl derivative of ammonia, in which two hydrogen atoms of ammonia are replaced by two alkyl group. And finally, suppose we are replacing all the three hydrogen atoms by three alkyl groups, then we are getting R3N, and this is called as tertiary amines. That means amines are divided into three types: primary, secondary and tertiary. Primary amines are monoalkyl derivative of ammonia, in which one hydrogen atom of ammonia is replaced by one alkyl group. They are represented by R single bond NH2. Functional group is single bond NH2. This group is called as amino group. While secondary amines are dialkyl derivative of ammonia, in which two hydrogen atoms of ammonia are replaced by two alkyl group. So representation is R2NH or RNHR. Then functional group R hata do, single bond NH single bond, and this group is called as imino group. Divalent NH is called as imino group. Finally, this is tertiary amine. Tertiary amines means it is a trialkyl derivative of ammonia. Trialkyl derivative in which all the three hydrogen atoms of ammonia are replaced by three alkyl groups. So we get R3N. So R3N is representation for tertiary amine. Functional group is trivalent N single bond N single bond, then single bond. That means trivalent N. This group is called as nitrile group. Which group? Nitrile group. All amines have same general formula, only their functional group is different. Otherwise their general formula becomes same: primary, secondary or tertiary. So there are three types. Common names of primary amines are given as alkyl amine. Alkyl amine. Here common names are given in the form of dialkyl amine. Dialkyl amine. And here trialkyl amine. Common name. This is about common name. Now for IUPAC system, they are given in the form of alkane amine. अल्केन जिसका ई रिप्लेस किया जाता है अमाइन, दैट्स व्हाई नेम इज अल्केन अमाइन. और अमाइनोल अल्केन आल्सो यूज्ड, अल्केन अमाइन और अमाइनो अल्केन. देन इन केस ऑफ डाइअल्काइल अमाइन, IUPAC नेम आर गिवन एज एन अल्काइल अल्केन अमाइन. हियर ओनली अल्केन अमाइन प्राइमरी, हियर एन अल्काइल अल्केन अमाइन. मतलब जो दो ग्रुप है उसमें से जो छोटा ग्रुप है, that smaller group is considered as n alkyl. मतलब वो नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए n, कैपिटल N. स्मॉल वाला n नहीं, नॉर्मल वाला नहीं, ये कैपिटल N, दैट मींस अटैच्ड और सब्स्टिट्यूटेड ऑन नाइट्रोजन एटम. सो n alkyl, और बड़ा जो ग्रुप है उसको अल्केन अमाइन.
And for tertiary, names are given in the form of N and dialkyl alkanamine. Alkanamine like this. N and dialkyl. जो 3 ग्रुप है उसमें से जो छोटे ग्रुप होंगे 2 उनको N and dialkyl, जो बड़ा होगा उसको alkanamine. So this is format for IUPAC. Now see here CH3 single bond NH2. This is primary amine. Because why it is primary? Because only NH2 group is present. Now we can identify primary, secondary, tertiary simply by functional group. NH2 है definitely primary, NH है secondary, N है tertiary like this. So CH3 NH2 methyl amine. Common name is methyl amine. And IUPAC name methane amine. Alkanamine के फॉर्मेट में देना है 1 कार्बन, that means methane amine. Suppose CH3 NHCH3. Common name is dimethylamine. Both are methyl group, that's why dimethylamine. And IUPAC name. दोनों भी सेम ही ग्रुप है, तो N-methyl methanamine. N-methyl. एक को क्या अपन ने पकड़ा है तो नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज ये N-methyl. Then 1 carbon atom is there, that means methanamine. So N-methanamine. टर्शरी में देखो नाइट्रोजन को सपोज तीनों भी CH3 है, CH3 CH3 CH3, तो N डाइमिथाइल. कॉमन नेम एक पहले कॉमन नेम लिखेंगे ट्राइमिथाइल अमाइन. कॉमन नेम ट्राइमिथाइल. देन IUPAC नेम. व्हाट विल बी IUPAC नेम? तीनों ग्रुप सेम है, 2 को सब्स्टिट्यूएंट पकड़ लो. N पर ये CH3, N पर ये CH3, दैट मींस N डाइमिथाइल. और फिर एक कार्बन बचता है, दैट मींस methanamine लाइक दिस. सो दिस इज नोमेनक्लेचर CH3 CH NH2 CH3. दिस इज isopropyl amine. Branching is at second carbon, that means isopropyl. NH2 group, that means amine. इधर NH है इसलिए इमाइन में लिखा जाता है, भले फंक्शनल ग्रुप इमिनो ग्रुप है, बट लिखते समय सभी को अमाइन ही बोला जाता है. दिस इज नाइट्राइल, पर लिखते समय अमाइन लाइक दिस. सो आइसोप्रोपाइल अमाइन, बट आइसोप्रोपाइल अमाइन इज नॉट सेकेंडरी अमाइन, इट इज प्राइमरी अमाइन. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर रहता था तो वो सेकेंडरी में चला जाता था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सेकेंडरी में, बट आइसोप्रोपाइल अमाइन इज नॉट सेकेंडरी, इट इज प्राइमरी बिकॉज NH2 ग्रुप इज देयर. इवन सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन इज प्राइमरी, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन इज आल्सो प्राइमरी. नेम टर्शियरी सेकेंडरी है फिर भी वो प्राइमरी में है बिकॉज NH2 ग्रुप इज देयर. सो आइसोप्रोपाइल अमाइन, IUPAC नेम alkanamine 1 2 3, that means propyne 2 amine. Propyne 2 amine. Here suppose another example CH3 NH2H5. कॉमन में अल्फाबेटिकली जो कौन से ग्रुप है तो मिथाइल एंड इथाइल. Alphabetically E comes first, therefore ethyl, methyl, then amine. Right? Then IUPAC नेम, बड़े को अपन alkanamine कंसीडर करते हैं और छोटा N अल्काइल, छोटा ग्रुप है मिथाइल, मतलब N मिथाइल इथैनamine. N मिथाइल इथैनamine. This is IUPAC. Suppose N CH3 C2H5. तो वो 2 मिथाइल और एक इथाइल, अल्फाबेटिकली E comes first, that's why ethyl, then dimethyl and then amine. This is common name. And IUPAC system N dialkyl alkanamine. जो छोटे ग्रुप है, छोटे वाले मिथाइल है, मतलब N डाइमिथाइल. देन बड़ा ग्रुप कौन सा है तो C2H5, मतलब 2 कार्बन वाला, इसलिए इथैनamine like this. Okay, suppose benzene ring CH2 NH2, फिनाइल इतना ग्रुप, फिर CH2 है मतलब बेंजाइलमाइन. टाइप इज अगेन प्राइमरी बिकॉज NH2 ग्रुप इज देयर. बेंजाइलमाइन IUPAC, फर्स्ट कार्बन पर अटैच है इसलिए 1 फिनाइल मिथैनमाइन. 1 फिनाइल मिथैनमाइन. फर्स्ट कार्बन पर क्या है फिनाइल ग्रुप, इसलिए 1 फिनाइल और एक कार्बन है इसलिए मिथैनमाइन.
like this. Now suppose benzene ring, then NH and then CH3. First identify type. So it is secondary amine because NH group is there. Type is secondary. Then common name. This is phenyl group. This is methyl group. That means methyl phenyl amine common name. IUPAC name. N-methyl बेंजामाइन. नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप है इसलिए N-methyl. उसके बाद में बेंजामाइन या फिर N-methyl एनिलीन भी बोल सकते हैं. बेंजीन को NH2 है डायरेक्ट तो एनिलीन. NH2 का एक H रिप्लेस हुआ है मिथाइल इसलिए N-methyl एनिलीन भी बोल सकते हैं. Another name is N-methyl aniline. Like this. CH3 C CH3 CH3 NH2. First type identify करो. Primary because NH2 group is there. बस ग्रुप से आइडेंटिफाई करना है. Primary है. Then one carbon is attached to three other. That means nature is tertiary. So tert 1 2 3 4 butyl amine. That means tertiary butyl amine is the example of primary amine, not tertiary. Then IUPAC 1 2 3 second पर मिथाइल है, so 2 मिथाइल. Then 1 2 3 प्रोपाइन 2 अमाइन, प्रोपाइन 2 अमाइन. क्योंकि इनका सिस्टम कैसा था प्राइमरी का डायरेक्ट अल्केन अमाइन. That means प्रोपाइन 2 अमाइन like this. Suppose C2H5 by 2 and C6H5. Nature tertiary because N is there. 2 ethyl 1 phenyl, so diethyl, then phenyl amine, then IUPAC. बड़े को अमाइन लगाओ मतलब बेंजामाइन. 2 ग्रुप इथाइल है मतलब NN डाइइथाइल बेंजामाइन like this. Got it? So this is about amines, and amine characteristic speciality of amine is that they have fishy type of smell. Which one? Fishy smell. And they have a general formula. Suppose we are considering general formula. CnH2n plus 3n. This is general formula for primary, secondary and tertiary amine. For example, n is equals to 3. That means C3. 3 to the 6, 6 plus 3, 9n. इसके प्राइमरी बनाओ, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी कौन सा बनेगा तो CH3, CH2, CH2, NH2. That means n प्रोपाइल अमाइन. या फिर आइसोप्रोपाइल भी बना सकते हो. n प्रोपाइल अमाइन और CH3, CH, NH2, CH3. आइसोप्रोपाइल अमाइन. Both are primary amine, right? IUPAC name propane 1 amine, propane 2 amine. 1 2 3 1 2 3 propane 1 amine, propane 2 amine. Which isomers position differing the position of functional group. ये बने प्राइमरी के. अब सेकेंडरी के बना के देखो. सेकेंडरी में कितने कार्बन चाहिए अपने को 3 और सेकेंडरी का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है NH. 3 कार्बन एडजस्ट करने हैं. एक साइड में 1 रखते हैं, दूसरी साइड में 2 रखते हैं. C लिखा तो H3 करना पड़ेगा और C2 लिखा तो H5. That means इथाइल मिथाइल अमाइन. और IUPAC नेम N मिथाइल इथेन अमाइन, राइट? और टर्शियरी का बना सकते हो. टर्शियरी में मतलब N फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा ये वाला. और उसके साइड में भी 3 कार्बन एडजस्ट करने हैं मतलब CH3 CH3 CH3. ट्राइमिथाइल अमाइन, राइट? Trimethylamine or IUPAC name should be N dimethyl methanamine. All they are functional isomers of each other, all having same molecular formula C3H9N, but they have different kind of functional group. NH2 amino group, NH amino group, and nitrile group like this. Okay, thank you.